તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। देखिए हमने देखा कि कल यूएस मार्केट जो 800-900 पॉइंट नेगेटिव थी और फिर डाउ जोन क्लोजिंग में कुछ 300 पॉइंट, सो इट रिकवर्ड क्वाइट बिट एंड इट कवर्ड द लॉस्ट ग्राउंड सब्सटेंशियली। तो उस वजह से आज हमने फिर हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार जो है सारे ऊपर है। खास करके निकाय जो है वो 5% अप है, दूसरे एशियाई बाजार भी ऊपर है और जो फिलहाल जो ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स है वो इन टेंडम चल रहे हैं। तो हमारा बाजार भी एज आई एम टॉकिंग टू यू 1000 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है। क्या ये कहेंगे कि टैरिफ के मामले में जो भी था वो अब बिहाइंड अस? स्टिल वी नीड टू गिव सम टाइम कि भाई आगे चल के क्या हो रहा है, कि क्या ये दिस कुड बी अ टेक्निकल बाउंस बैक ऑल्सो, क्योंकि हमने लगातार जो गिरावट देखी तो देर आर value buying will always emerging in every market. So is it a value buying, or is that the problem which was, or the reason for which the markets took tumble world over, क्या उसको address कर रहे हैं, या तो फिर they expecting some positive news from Washington DC? लास्ट हफ्ते में ही टेरिफ की अनाउंसमेंट हुई और ये हफ्ता शुरू होते ही अब मंडे स्टार्ट एज अ ब्लैक मंडे। तो इस हफ्ते में आके क्या हाल हो सकता है? देखिए वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे न्यूज फ्लो आते जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली मार्केट्स विल मिमिक दोज न्यूज फ्लो, और उस वजह से नेगेटिव न्यूज पॉजिटिव न्यूज जो भी है, क्योंकि नथिंग इज बिन डिस्काउंटेड एज ऑफ नाउ, सो जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा अकॉर्डिंगली मार्केट विल बिहेव, एंड इसलिए वॉलेटिलिटी बहुत ही रहेगी आने वाले दिनों में। नहीं, टैरिफ ही है, क्योंकि टैरिफ की वजह से पूरा ग्लोबल ट्रेड पे उसकी इम्पैक्ट आएगी, और अगर इतने हाई टैरिफ है तो जाहिर है कि ऐसा डर है कि यूएस में कहते हैं कि 60% चांसेस ये है कि यूएस विल नाउ स्लिप इनटू रिसेशन। तो अगर यूएस रिसेशन में जाता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का लार्जेस्ट कंज्यूमर है, तो अगर वो रिसेशन में जाता है तो उसकी इम्पैक्ट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पे आती है। So yesterday market has down terribly, and today finally somewhere this is a little comfort for all the Indians. What you will say about today? Well, good news as of now. When the markets have opened, and in the first hour, the market seems to be, in positive territory, Sensex up by around 1,000 points. What we saw yesterday, Dow Jones recovered substantially from, at one point of time, I think it was down by more than 900, 800, 900 points, and then it gave closing of negative 300. So today, the Asian markets, including Nikkei, they are in positive territory. Nikkei is up by 5%, and whether this could be technical bounce back across, difficult to say, but maybe people are expecting something positive coming out of Washington DC. Yeah, and one more thing, last week the tariff has announced, and this week was our start week is from the Monday was Black Monday, and today is the Tuesday. So what is your prediction about this upcoming week? Well, very difficult, because this is something which is being played out at the highest and the topmost level of global countries. Different countries. So, it is beyond anybody's. One can only assume what is going to happen. But one thing is certain: markets are going to remain very volatile, because market will react to each news flow which comes out from various commercial capitals. So one last question is that, is there any other reason other than tariff, or the tariff is the only reason, and No. how it is going to impact? So the tariff is the only reason, what we have seen in last 1 month or whatever, last few weeks. Tariff is the only reason, because if these kind of tariff, US persists, then there's going to be, US will deal with very high inflation, and that will lead to slowdown in consumption. That will lead to recession.
So now the consensus in US is that there are 60% chances of US slipping into recession, and if that happens, the ripple effect will be felt all over world, and the global economy will also go for a toss, and that's so tariff is the only reason. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.